अखन देशक विभिन्न स्थान में सड़क विस्तारक काज होइत आयल छै। सड़क विस्तार मात्र नहीं, एकरा सखबर आधुनिक रूप देबाक सेहो प्रयास भऽ रहल छै। तहिना शहर सब में सड़क मात्र नहीं बल्कि पैदल यात्रु सभक लेल फुटपाथ सेहो बनाओल जाइ छै। गाड़ी के अत्यधिक चाप रहला सँ दुर्घटना के जोखिम सँ बचबाक लेल सेहो फुटपाथ आवश्यक पड़ै छै। मुदा इहे फुटपाथ के कब्जा क खुदरा व्यापारी सब व्यापार करऽ लागला बाद पैदल यात्री समस्या में पड़ब स्वाभाविक छै। अतबे नहीं, शहरक सौंदर्य में सेहो असर पड़ै छै। एहने अस्त व्यस्त बनल छै विराटनगर महानगरपालिका के सड़क सब। किछ समय पहिने धरि सड़क सब पूर्ण रूप में नहीं बनला सँ महानगर एहि विषय में ओतेक ध्यान नहीं देने छल। मुदा आब विराटनगर महानगरपालिका के अधिकांश सड़क आ सड़क फुटपाथक निर्माण पूरा भेला बाद महानगर फुटपाथ में सामान राखि कऽ व्यापार करवाला के कार्रवाई शुरू केने छै। नगर प्रहरी आ नेपाल प्रहरी के सहयोग में व्यापारी सब फुटपाथ में राखने सामान के नियंत्रण में लेनाय शुरू केने छै। तल झरेको उप प्रमुख इंदिरा कार्की फुटपाथ व्यापार करने भक पैदल यात्री के लेल बनाओल गेल स्पष्ट कर रहल छै। जहाँ पेटी खाली छ, जहाँ बाटो बनेको छ त्यहाँको पेटी चाहिँ खाली गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आज अनुगमन गर्दै हिँडेको हामीले माइकिङ पनि गरेको थियो। हामीले यो एक दिन अगाडि दुई दिन अगाडि हाम्रो कर्मचारी साथीहरू आएर प्रत्येक दोकानमा भन्नु पनि भएको थियो। तर नटेरेर फेरि 8-10 बजेदेखि लाग्नु भएको हुनाले हामीले 9 बजेदेखि वाच गऱ्यौँ। राखेको देखेपछि हाम्रो टिम आएर आज हामीले सामान जसको चाहिँ पेटीमा छ त्यो हामीले जफत गरेका छौँ। के हुन्छ उनीहरूले के कारबाही हुन्छ, उहाँले नियमअनुसारको कारबाही हुन्छ। महानगरपालिकामा जहाँ बाटो बनेको छ त्यहाँ जनताले राम्रोसँग हिँड्न पाउनु पर्छ। उप प्रमुख कार्की फुटपाथ खाली कर 4 दिन पहिने ही माइकिंग करोलो पर व्यापारी सब अटेरी केला बाद अपने सड़क में अनुगमन कर बाध्य भेल प्रतिक्रिया देलनि अछि। एम्हर व्यापारी सब महानगरपालिका मनोमानी केने आ फुटपाथ में नहीं रहल सामान सब सेहो ल गेल उपराग कर रहल छै। नगरपालिकाको मान्छे आएर भनेको यो पेटीदेखि यतापट्टि राख्न पाइन्छ, तर 85 सेन्टिमिटरको नियम अहिले फिलहाल बाटो बनेको छैन, तबसम्म उता राख्नु, पछि यसलाई राख्न मिल्दैन भनेको। ल मैले सोधेर यतापट्टि नै राख्यो। आज बिहानदेखि एकदम मिलाएर सट्ट एकदम भित्रपट्टि गरेर राखेको थियो। अहिले सबै माल भित्र राखेकोबाट पनि उठाएर गलिचा सबै लगिसक्यो। भित्रबाट पनि लगेछ अनि त्यहाँ माथि राखेको त्यो अनलिगल 85 सेन्टिमिटर छैन, यहाँबाट त्यो 4वटा ब्ल्याङ्केट उठाएर लाग्यो। विराटनगर महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी महानगर में रहवाला सबसँ महानगर के निर्देशन मानल जेबाक बताबि रहल छथि। ओ बेर बेर अनुरोध केला पर अटेरी केला सँ सामान नियंत्रण में लेब बाध्य भेल प्रतिक्रिया देलनि अछि। नागरिकको अधिकारको मात्रै कुरा उठ्छ, कर्तव्यको विषय पनि हो। महानगरमा बसिसकेपछि महानगरपालिकामा को नगरवासीले के कस्ता किसिमका चाहिँ कर्तव्यहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने यो विषय नियमन गर्ने भन्दा पनि के भन्दाखेरि उहाँहरू आफैले महानगरवासीले पनि बुझ्ने विषय हो। हामीले पटक अनुरोध गरेका छौँ। अब हामी त्यसलाई सूचना पनि पटक गरेका छौँ, तर पनि त्यो चाहिँ सुधार भएको देखिया छैन। हामी अब कडा रूपमा हामीले जहाँ निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ सडकलाई अवरुद्ध गर्ने गरेर बाटो अतिक्रमण गरेर राखेका सामग्रीहरू हटाउँछौँ र त्यसमा हामी जरिवाना दण्डित गर्छौँ। महानगरपालिका से कयल गेल काज सराहनीय छै। मुदा रोजी रोटी के लेल फुटपाथ पर व्यापार करैत आयल खुदरा व्यापारी सभक लेल व्यवस्थित स्थान उपलब्ध करायब सेहो आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल विराटनगर से शिवम मिश्रक रिपोर्ट।